बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट योर ड्रीम जॉब 2022 के अगले एपिसोड में आप तमाम का इस्तकबाल है। इधर 2 दिनों तक हम कोई वीडियो तैयारी के हिसाब से नहीं डाल सके। उसकी एक वजह यह भी थी कि बहुत सारा काम इस नौयत का आ गया था कि हम इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा सके, दूसरी चीज़ों को हमें लाना पड़ा। लेकिन चूँकि हमारी ये मंशा है, हमारी ये कोशिश है कि हम आपको तैयार कराएंगे, तो आज हम इसी हवाले से इकोनॉमिक्स के 3rd एपिसोड के लेकर के हम हाजिर हो रहे हैं। ये बेहतरीन एपिसोड है। हम चाहते हैं तमाम लोगों से इस तरह से आप अपने आप को तैयार करें, ख्वाब गफलत से जागें, क्योंकि अगर आप भी हम सोते रहे तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये मकसद पूरा नहीं होगा। हम इसीलिए लेकर के आते हैं आपके लिए, ताकि एक तो ये कि आप जान सकें कि किस नौयत के सवालात आते हैं, क्योंकि 35,000 से ज़्यादा की पोस्टों का जो है ऐलान हो चुका है। अनकरीब ये पोस्टें आएंगी, और अगर हम अब भी सोते रहे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो गोल है, हमारा जो मकसद है, वो पूरा नहीं होगा। बहरहाल, हम जब इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, ताकि ये मकसद पूरा हो सके। और हम आपके चेहरों पर देखना चाहते हैं मुस्कान। हम चाहते हैं कि आपके हाथ में हो एक जॉब, कि अगर जॉब नहीं है तो फिर पता चला कि जो है हम तमाम तरह के मसाइब में घिर जाते हैं, हम तरह तरह की परेशानियों में घिर जाते हैं, और फिर हम अफसोस करते हैं पूरी ज़िंदगी। तो अफसोस करने के लिए बेहतर है कि 6 महीने हम गुजार दें, फिर उसके बाद जो है हमारे हाथ में नौकरी हो, और मेहनत अच्छी करें, और ये कोशिश करें कि जितनी भी पोस्टें आई हैं उनमें हमारे लिए एक जॉब ज़रूर से ज़रूर है। देखिए, अगर हम मुस्बत कदम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी आती है, लेकिन अगर हम मायूसी के साथ कोई तैयारी करेंगे, हम पहले ही से होपलेस हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि मायूसी कुफ्र है। और हम पहले ही से मायूस हो गए तो कोई भी चीज़ हमें मिल नहीं सकती, क्योंकि कोशिश करना हमारा काम है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, मदद अल्लाह की आती है, सारी चीज़ें ऊपर लिखी जाती हैं, हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है। बहरहाल, हम लेके आते हैं ये एपिसोड, देखें और कोशिश करें, मेहनत करें। 1. What do you mean by the supply of goods? A. Stock available for sale. B. Total stock in the warehouse. C. The actual production of the goods. D. Quantity of the goods offered for sale at a particular price per unit of time. Correct answer D. Q2. What do you mean by under conditions of a perfect competition in the product market? A. MRP is equal to VMP. B. MRP VMP. C. VMP MRP. D. None of the above. Correct answer A. Q3. Which of the following is the relation that the law of demand defines? A. Income and price of a commodity. B. Price and quantity of a commodity. C. Income and quantity demanded. D. Quantity demanded and quantity supplied. Correct answer B. Q4. What do you mean by a mixed economy? A. Modern and traditional industries. B. Public and private sectors. C. Foreign and domestic investments. D. Commercial and subsistence farming. Correct answer B. Q5. What do you mean by the demand of a commodity? A. Desire for the commodity. B. Need for the commodity. C. Quantity demanded of that commodity. D. Quantity that consumers are able and willing to buy at various prices during any particular period of time. Correct answer D. Q6. Starting from the time of independence, why did India follow a planned economy? 1. India followed a 5-year plan and required an outlook. 2. Directive principles of Indian Constitution indicated the planned vision of India. 3. There was no indication whatsoever from the 5-year plans regarding how much of each and every good and service is to be produced. Choose the correct statements from the given options. A. Only 2. B. 2 and 3. C. 1 and 3.
D. All of the above. Correct answer B. Q7. What do you mean by gross national product? A. The total value of goods and services produced in the country. B. The total value of all the transactions in the country. C. The depreciation in the total value of goods and services produced in the country. D. The total value of goods and services produced in the country and the net factor income from abroad. Correct answer D. Q8. Which of the following is the reason for the decline in the child-sex ratio in India? A. Low fertility rate. B. Female feticide. C. Incentives for a boy child from the government. D. None of the above. Correct answer B. Q9. What factors are taken into consideration while revising the poverty line periodically? A. By conducting a survey every 5 years. B. Survey carried out by National Sample Survey Organization. C. Both A and B. D. None of the above. Correct answer C. Q10. In India, which bank's institutions have the highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied activities? A. Cooperative banks. B. Regional rural banks. C. Commercial banks. D. Microfinance institutions. Correct answer C. Q11. Which of the following are linked with the financial sector of India and controlled by the Reserve Bank of India, RBI? A. Commercial bank. B. Money lenders. C. Stock exchange operations. D. All of the above. Correct answer C. Q12. When price floor is set above equilibrium price, it will result in A. Shortage. B. Surpluses. C. Equilibrium. D. None of the above. Correct answer B. Q13. What is gross domestic product? A. The total value of goods and services manufactured in the country. B. The total value of all the transactions in the country. C. The reduction in the total value of goods and services produced in the country. D. The monetary value of all finished goods and services made within a country during a specific period. Correct answer D. Q14. Why is the unemployment rate low in India statistically? 1. Unemployment is calculated only from the age group of 15 years to 59 years. 2. Unemployment survives only when an individual cannot find a job. 3. People are not interested in working outside the domestic area. Choose the correct option. A. Only 3. B. 2 and 3. C. Only 2. D. All of the above. Correct answer C. Q15. What does the bowed-out shape of the production possibilities curve illustrate? A. Law of increasing opportunity cost. B. The production is inefficient. C. The production is unattainable. D. The demand is relatively elastic. Correct answer A. Q16. What is the main economic problem faced by the society? A. Unemployment. B. Inequality. C. Poverty. D. Scarcity. Correct answer D. Q17. What does capitalism refer to? A. The use of market. B. Government ownership of capital. C. Private ownership of capital goods. D. Private ownership of homes and cars. Correct answer C. Q18. The goal of a pure market economy is to meet the desire of A. Consumers.
B. Companies. C. Workers. D. The government. Correct answer A. Q19. What does the law of demand mean? A. As the quantity demanded rises, the price rises. B. As the price rises, the quantity demanded rises. C. As the price rises, the quantity demanded falls. D. As the supply rises, the demand rises. Correct answer C. Q20. Which of the following is an example of an agricultural price support program? A. A price ceiling. B. A price floor. C. Equilibrium pricing. D. None of the above. Correct answer B. 21. Demand for a commodity refers to A. Need for the commodity. B. Desire for the commodity. C. Amount of the commodity demanded at a particular price and at a particular time. D. Quantity demanded of that commodity. Correct answer C. 22. Which among the following statement is incorrect? A. On a linear demand curve, all the 5 forms of elasticity can be depicted. B. If two demand curves are linear and intersecting each other, then coefficient of elasticity would be same on different demand curves at the point of intersection. C. If two demand curves are linear and parallel to each other, then at a particular price the coefficient of elasticity would be different on different demand curves. D. The price elasticity of demand is expressed in terms of relative, not absolute, changes in price and quantity demanded. Correct answer B. 23. If the demand for a good is inelastic, an increase in its price will cause the total expenditure of the consumers of the good to A. Increase. B. Decrease. C. Remain the same. D. Become zero. Correct answer A. 24. The horizontal demand curve parallel to x-axis implies that the elasticity of demand is A. 0. B. Infinite. C. Equal to 1. D. Greater than 0 but less than infinity. Correct answer B. 25. An individual demand curve slopes downward to the right because of the A. Working of the law of diminishing marginal utility. B. Substitution effect of decrease in price. C. Income effect of fall in price. D. All of the above. Correct answer D. तो आपने देखा आदि तलबा और तालिबात कि हमने 25 सवालात आज पेश किए। इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। हम दूसरे और भी सब्जेक्ट लेकर के आते रहेंगे, जनरल स्टडीज़ के और भी सवालात लेकर के आते रहेंगे। बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़-ए-दक्कन के साथ, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। और बहुत सारे लोग जो है पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, इससे जो है अफ़सोस होता है मुझे। वजह क्या है कि हमारा जो मकसद है वो मकसद तो यही है कि आप पूरे एपिसोड को देखें, पूरे सवालों को देखें, तैयार करें। जो सवालात आपको आ रहे हैं उनको आगे बढ़ जाएं, जो नहीं आ रहे हैं उसे नोट करें और फिर अच्छी तरह से तैयारी करें। सिर्फ एक बार क्लिक कर लेने से, 1-2 मिनट सिर्फ देख लेने से कोई तैयारी नहीं होती। तैयारी करना है तो आपको मेहनत करनी होगी, वक्त देना होगा, वक्त सर्फ करना होगा। और वक्त जो है अगर आप नहीं देंगे तो वक्त भी आपका साथ नहीं देगा। बहरहाल लेके आते रहेंगे इसी तरह के और भी एपिसोड। जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़-ए-दक्कन के साथ। बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज़।